We will finish fundamental duty and DPSP, that is directive principles of state policy. Now it's in part 4 of Indian Constitution, Article 36 to 51. Actually 38 to 51 because 36 is definition of state. Article 38 is nature and significance of DPSP. हमने ये कहाँ से लिया था? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से we took it, and Irish people took it from Spanish. Features क्या है DPSP के? Ideals which states should keep in mind formulating policies, enacting laws, that is constitutional instructions to state in executive, legislative, administration. स्टेट के पार्ट 4 के अंदर है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. नाउ रिजेंबल करता है किसको? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को. एम्बडी वेलफेयर स्टेट, नॉट पुलिस स्टेट. ओनली जहाँ पे लॉज एंड ऑर्डर्स होते हैं वहाँ पे उसको बोलते हैं पुलिस स्टेट. तो ये उसकी बात नहीं करता, ये वेलफेयर स्टेट की बात करता है. नॉन जस्टिसकेबल है ये. बट आर्टिकल 37 is DPSP fundamental in governance and it shall be duty of state to apply these in making laws. That is Article 37. Help the court in determining constitutional validity of a law. DPSP is always given a greater preference compared to Article 14 and 19. In Minerva Mills, it was declared. मिनर्वा मिल्स जो है एक सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसका हम कोट करते हैं. क्लासिफिकेशन में क्या है? ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं, ये गांधीयन है और ये लिबरल इंटेलेक्चुअल भी हैं. तो 3 तरह के डीपीएसपी हमने बांटे हैं, सोशलिस्टिक है, गांधीयन है और लिबरल है. नो क्लासिफिकेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने ही किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है. न्यू डीपीएसपी जो है 42nd अमेंडमेंट के अंदर नए डाले गए थे, जैसे कि आर्टिकल 39 विच इज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, हेल्दी एड इन वर्किंग, it's like healthy development of children, it's for that. Equal justice and free legal aid to poor, it is for equal justice and free legal aid to poor, Article 39A. Then there is secure participation of workers in management of industries, 43A. Protect and improve environment, staggered forest and wildlife, Article 48 and 48A. So 42nd amendment के through हमने जो नए DPSP लिए उसमें है secure opportunity for healthy development of children, Article 39. Equal justice and free legal aid to poor, that is Article 39A. There is a secure participation of workers in management of industries, 43A. Protect and improve environment, safeguard forest and wildlife, Article 48 and 48A. 43A is about worker in management of industries. 43A is worker in management. 43B is cooperatives. Then there is 48A is for environment and wildlife protection and improvement. There is 45 also, which is for education. So in 44th amendment, what we did is we inculcated Article 38, which is to minimize inequalities in income, status, facility and opportunity. तो ये मिनिमाइज करना है किसको? इनइक्वालिटीज को. स्टेट का ये ड्यूटी बनता है आर्टिकल 38 के अंदर. 86th अमेंडमेंट जो है दैट वाज चेंज्ड सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45. अर्लियर इट वाज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, अभी इट इज आर्टिकल 21A के अंदर है ये. इट्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर 0 to 6 ईयर एज ब्रैकेट नाउ. 86 अमेंडमेंट के अंदर ऐसा किया गया था. 97th अमेंडमेंट इज प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 43B. Promotion of cooperative society, Article 43B. Why DPSP is non-justiciable? Because number one is financial resources is not available for the state to implement it. Then there is vast diversity and backwardness. There is newly independent country. India that time was a newly dependent country, and it was a burden, quite burdensome task. There is conflict between fundamental right and DPSP. Champakar and Duranji case 1951. Supreme Court. When conflict, then fundamental right को ज़्यादा importance देना है DPSP से, और आप amend भी कर सकते हो fundamental rights को. First amendment हुआ 1951 में, 4th हुआ 55 में, 7th हुआ 64 में, to implement some DPSPs. That was Champakaran case. Champakaran ने बोला FR is a higher priority case compared to DPSP. Then there was Golaknath case in 67. Supreme Court said fundamental rights cannot be amended for DPSP. Government 24th amendment लेके आई और 25th amendment लेके आई. Then there is Keshwanand Bharti case 1973. See, the sequence is also very important. It's Champakaran, then there is this Golaknath, then Keshwanand Bharti case 1973.
केशवानंद भारती की गवर्नमेंट 42nd अमेंडमेंट 76 लेके आई, सुप्रीमेसी ऑफ एनी डीपीएसपी ओवर 14, 19 and 21. Minerva Mill case is 1980 case which says that fundamental right is more again important than DPSP, but इसने sequential दे दिया कि खाली 14 and 19 आर्टिकल के केस में ऐसा है. Okay, it is today's scenario as well. And Champaran was also right, but उन्होंने उसको completely बोल दिया था और इन्होंने उसको conditional बोल दिया है. Article 39B is equitable distribution of material resources of the community for the common good. Article 39C is prevention of concentration of wealth and means of production. Present position जो है that is quite balanced one. Fundamental right is having higher importance than DPSP, but fundamental right can be amended for DPSP without making changes to basic structure. Directive outside part 4 कौन से है? 335, 350A and 351. 335 is claims of SC/ST into consideration and maintaining the balance. Then 350A is state should make arrangement for instructions in mother tongue to in linguistic minorities at primary stage. That is 350A. Then the 351 that is development of Hindi. हमने previously पढ़ा था कि कुछ rights भी available हैं outside fundamental right of constitution, and those rights were 301 and there was a part 300 also. 300 was also a right and 301 was a right. Then there were another there were 6 rights, I think. Conclusively there were 6 rights. Okay, let me find it. 301 was there, article 300 was there, and 265 was there, which says that no tax except authority of law, and 326 is there जहाँ पे MP and MLA election में UAF has to be followed, that is universal adult franchise. 265, 300, 301 and 326 सेम मैनर में कौन से जो आपके DPSPs हैं वो आउटसाइड DPSP अवेलेबल हैं. तो आर्टिकल 335 जो ये बोलता है कि SC/ST के क्लेम्स को आप कंसिडर करेंगे. आर्टिकल 350A जिसमें कि स्टेट जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए अरेंजमेंट्स करेगा. एंड आर्टिकल 351 जो कि कहता है कि स्टेट जो है हिंदी का भी डेवलपमेंट करेगा. That is, now we are done with DPSP. Now we are coming to fundamental duties, which is inspired by USSR, USA, France, Germany, Australia. इन सब के पास में भी सोशलिस्टिक फील है. क्वाइट फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इसमें सोशलिस्टिक फील है. स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था 1976 के अंदर. एक्सेप्टेड सम ऑफ द रिकमेंडेशन. 42nd constitution amendment was related to this. article 51A 10 fundamental duties of citizen उन्होंने सजेस्ट करी थी हमको, लेकिन उन्होंने एक्चुअली 8 ड्यूटीज जो है वो रिकमेंड करी थी हमको. फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड, यानी कि हमने इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी इंक्लूड नहीं किया. कोई भी लॉ इम्पोजिंग पेनल्टी शैल बी कॉल्ड इन not appropriate if it's not fundamental right. And fundamental duty to pay tax को भी हमने नहीं शामिल किया था इसके अंदर. तो पेनल्टी को नहीं किया था, कोई भी पेनल्टी वाला लॉ भी हमने नहीं किया था, और फंडामेंटल ड्यूटी टू पे टैक्स भी नहीं किया था. फीचर्स क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज आर हैविंग मोरल नेचर एंड सिविक ड्यूटी नेचर. ओनली फॉर सिटीजन, इट्स नॉट फॉर फॉरेनर्स. ऑफ कोर्स ड्यूटी सिटीजन की होगी. नॉन जस्टिसिएबल है ये. इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये जो है पर मे इम्पोज पेनल्टी, they can impose penalty. 1992 Supreme Court, if any law in question gives effect to any fundamental duty. Okay. List is number 1 fundamental duty is constitution, flag और anthem का respect करना. 2 है आपका follow noble ideals of Indian national movement. Number 3 है protect sovereignty, unity and integrity of India. Then 4 is defend country when called upon. Number 5 is promote harmony. Number 6 is preserve rich heritage and culture. Number 7 is protect environment. Number 8 is scientific temper को increase करना. Safeguard public property is number 9. And 10 is striving towards excellence. 11th is 86 amendment से जोड़ा गया था to provide opportunity for education 6 to 14 years. Verma Committee observations 1999. Then there is amendment of constitution. Amendment of constitution. I think we can make another video for this one. So it's done for DPSP and fundamental duties. Goodbye.